Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So children, are you reading the grammar concepts? Are you putting them in practice? Are you attempting more of English everywhere possible? Great. So children, continue to do that because it's going to make you a pro in English. So बच्चों, do you know अपना भारत जो है, okay, our country Bharat, India is so versatile. There are so many different things in our country. वैसे ही you will see that our country has lot of art forms. So देखते हैं the different art forms and the artists of our country. That's the name of the chapter, the art and the artist. Let's read the prologue and see what it says and what this chapter has for us. Okay? The prologue says, in this lesson, we will read about the classical dance forms and a renowned music maestro, Pandit Ravi Shankar. People like him as he sustained and uplifted the rich cultural heritage of our country. Our classical dance forms are a harmonious blend of graceful movements and expressive gestures. They have their roots in ancient traditions and mythology. Each dance form represents the unique cultural identity of a specific region of India, okay, in India. Let us learn more about them through this chapter. So बच्चों आप देखोगे कि India, okay, such a huge, a diverse country. आप देखोगे it is full of different cultures, different traditions, different dance forms, different forms of folk music. वैसे ही classical music, okay, and classical dance forms are quite famous of our country. आपको पता है बाहर के कंट्री के लोग भी इंडिया आके okay, अलग अलग चीज़ें सीख रहे. They're learning our dance forms, they're learning yoga and they're practicing all these things in their country. So isn't it a pride moment for us? Okay, so now let's understand what are the different dance forms and let's talk about the music maestro, Pandit Ravi Shankar in this chapter. Okay, before that, let's do a warm-up. Discuss how Western dance has influenced Indian classical dance and music. So बच्चों Western dance जो है, it has influenced us to some extent. Okay, if you see कि आजकल अलग अलग Western dance forms भी इसमें हमारे country में people have started following that also. But let's see how does it influence our Indian classical dance and music. Okay, you have to do a research on it and discuss it with your friends and teachers. Alright, so do this exercise. Alright, now let's read this chapter. The first part talks about the art. Bharatnatyam is one of the oldest classical dance forms. The word is a compound of bha for bhav or emotional expression, ra for raga or melody, and ta for tal or rhythm. It originated as a temple dance primarily in Tamil Nadu. The key posture is the straight upper body with the legs bent halfway and the knees spread out and the feet positioned like a half open fan. आप इस पिक्चर में भी देख लो कि कैसे आप देखोगे कि भारतनाट्यम जो which is the one of the most oldest dance form of India. Okay, how is this word come into picture? This word, okay, आप देखोगे इसके word के अलग अलग वर्ड्स मतलब जो लेटर्स है उसमें अलग अलग मीनिंग है. जैसे भा होता है भावनाओं के लिए, द एक्सप्रेशंस, भाव, आपके जो भाव होते हैं ना, वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ द भा. देन रा इज फॉर रागा, ओके, विच इज द मेलेडी. एंड ता मीन्स ताल और द रिदम जिसमें द पर्सन इज डांसिंग. ऑलराइट, और इसके पॉस्चर देखो, ये इट वाज ओरिजिनली अ टेम्पल डांस फॉर्म, बट अभी आप देखोगे तो हर स्टेट में, हर रीजन में लोग इसको सीखते हैं और डांस करते हैं. ओके, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉस्चर कि किस पोजीशन में, ओके, द डांसर इज, उसके अपर बॉडी जो होती है इट इज स्ट्रेट
एंड लेग्स जो होते हैं वो बेंट होते हैं हाफ वे, ओके, और घुटनों तक बेंड करके उनको स्प्रेड आउट करते हैं। और आप देखोगे उनका जो साड़ी जो होती है जो बंधी हुई है उसका कैसे वो जो रिफ्लेक्ट होता है, इट लुक्स लाइक अ फैन, इट लुक्स लाइक अ हाफ ओपन फैन। Okay, now let's look at the next dance form, which is Kuchipudi. Okay, it is named after the village of its origin, Kuchilapuram, in the Krishna district of Andhra Pradesh. Now, Kuchipudi is the form of dance from Andhra Pradesh. Okay, the dance has quick movements and fast-paced footwork and acting. Kuchipudi today is performed as a solo or a group presentation, but historically it was performed as a dance drama. सो इसमें इस डांस फॉर्म में डांस भी है, एक्टिंग भी है, ड्रामा भी है। ओके, इट हैड सेवरल डांसर्स टेकिंग डिफरेंट रोल्स। सो अर्लियर डेज में काफ़ी सारे डांसर्स होते थे। ओके, आजकल उसको सोलो या ग्रुप प्रेजेंटेशन दोनों में किया जाता है, बट पुराने ज़माने मोस्ट इट वाज मोर लाइक अ ड्रामा। ओके, नेक्स्ट इज द नेम मोहिनी अट्टम, लिटरली मीन्स डांस ऑफ द एन्चांट्रेस। Okay, dancers wear a traditional white and gold costume. The hair is tied into a bun with white flowers on the left side of the head. The swaying movements are performed in medium tempo. Okay, so the next dance form है, it is like मोहिनी अट्टम। इट इज़ इसका मीनिंग क्या होता है, एन्चांट्रेस जो होती है ना, जो आपको अपने वश में कर लेते हैं, या फिर यू नो विच इज़ सो इम्प्रेसिव। ओके, अ वुमन हु यूजेस मैजिक ओके टू पुट समवन और समबडी अंडर द स्पेल, सो वो अपने वश में करती है। मोहिनी अट्टम जो है, इट इज़ लाइक यू नो इट्स ट्राइंग टू गेट यू इन देयर कंट्रोल। ओके, और इस डांस फॉर्म में जो आप देखोगे इट इज़ मोर लाइक अ, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ ड्रामेटिक टाइप ऑफ अ डांस फॉर्म। ओके, यहाँ पे ट्रेडिशनल वाइट और गोल्ड कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, हेयर इज टाइड इन अ बन, और जो स्वेइंग मूवमेंट्स जो होते हैं, डांस के मूवमेंट्स जो होते हैं वो मीडियम टेम्पो में होते हैं। नेक्स्ट इज मणिपुरी। द मणिपुरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द एरिया मणिपुर। द लाई हरोबा, a dance depicting the creation, is considered to be the original form of modern Manipuri. The most notable performance is that of the Ras Leela and the Pung Cholim or drum dance, in which dancers play on a drum known as Pung. As they play, they leap and swirl in a fast rhythm. So ये जो है मणिपुरी डांस फॉर्म है वो इट इज़ कम फ्रॉम द रीजन ऑफ मणिपुर, और इसमें ज़्यादा करके दे फोकस ऑन द रास लीला। ओके, जो कृष्णा और राधा की रास लीला होती है उस पे, और ड्रम डांस पे फोकस करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ओडिसी। ओडिसी रिलेट्स इट्स ओरिजिन टू द टेम्पल डांसेस ऑफ एंशिएंट नॉर्दर्न इंडिया। एज इन अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स देयर इज द नृत्य और डांस एंड अभिनय, ओके, वेयर हैंड जेस्चर्स and facial expressions are used to convey a story. So Odissi dance form जो होती है पुराने ज़माने में ancient northern India के temple dances में it is considered, okay? और वहाँ इस डांस फॉर्म में जो नृत्य होता है उसके साथ होता है अभिनय which is acting, okay? और hand gestures and facial expressions जो होते हैं वो use करके, okay? The dance conveys the message, okay? or a story. Next is Kathakali. Kathakali is one of the oldest theatre forms in the world. Dancers adopt characters and themes based on the Ramayana and the Mahabharata. One of the most interesting aspects of Kathakali is its elaborate makeup code. Characters are categorized according to their nature. This determines the colors used in the makeup. The faces of the good kings are green. Kings with negative characteristics are also green, but with red marks on the cheeks. Extremely angry characters wear red makeup and flowing red beard. Okay, forest dwellers wear black makeup while female characters have yellowish faces. So Kathakali जो होता है is primarily this is a part of Kerala. Okay, और इसमें ये जो डांस फॉर्म होता है इसमें जो स्टोरी बताई जाती है इट इज़ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रामायण और महाभारत.
अब इसमें भी क्या होता है, इसमें जो मेकअप होता है, जो कैरेक्टर्स आप देखोगे इस फोटो में, आप कैरेक्टर्स देख रहे हो, इनका जो मेकअप जो होता है ना, वो अलग अलग कैरेक्टर्स को डेपिक्ट करता है। जैसे अगर ये कैरेक्टर जो है वो गुड है, ओके, इफ इट इज़ अ गुड कैरेक्टर, अ गुड पर्सन, तो वो गुड किंग्स के बारे में होगा, तो वो उनके फेस होंगे ग्रीन कलर के, ओके। अब अगर किंग का नेगेटिव रोल है, ओके, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ग्रीन के साथ होगा नेगेटिव मार्क्स विथ रेड, ओके। फिर एक्सट्रीमली एंग्री कैरेक्टर होगा, बहुत ही गुस्से वाला कैरेक्टर होगा, तो दे विल वेयर अ रेड मेकअप, ओके, एंड अ फ्लोइंग रेड बियर्ड, ओके। एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल के लोग होंगे, उनको ब्लैक मेकअप होगा उनका, एंड फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका होगा येलो फेसेस। सो देखो आप कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग अलग डांस फॉर्म्स में वो लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं, और कैसे अपने अपने ट्रेडिशन को, अपने अपने रीजन के कल्चर को कैसे वो बता रहे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट डांस फॉर्म विच इज कॉल्ड द कथक. Kathak is a dance form that traces its origin to the nomadic bards of ancient northern India, known as Kathaks or storytellers. The technique of Kathak today is characterized by fast rhythmic footwork. The dance movements include numerous rotations or furrows. Okay, so बच्चों कथक जो है ज़्यादा करके यूपी में करते हैं. Okay, it is a dance form of UP. Okay, but if you see now in our Indian culture there is nothing based as okay ये इस region से related है या उस region से. People all over India okay perform them and learn them also. So इस dance form में I have actually seen कथक का live show and it is really worth. आपको अगर बच्चों ऐसे चांस मिलता है ऐसे शोज अटेंड करने के लिए, डू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डू विजिट okay with your parents and watch these shows because they really show our culture. You know, कथक में इतने फास्ट लेग मूवमेंट्स होते हैं डांस करते वक्त, दे टेलिंग अस स्टोरी, एंड देन उसमें भी बहुत से ऐसे चक्कर लेते हैं वो लोग. ओके, लॉट ऑफ न्यूमेरस रोटेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट विच आर रियली वर्थ सीइंग. द एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते जब स्टोरीज बताते दे आर ब्यूटिफुल, ओके, एंड दे आर मेस्मराइजिंग. तो आपको अगर चांस मिलता है तो डेफिनेटली go to watch any of the classical dance shows. They are really worth a watch. Okay, now let's track your performance through this My Performance Tracker. Quickly answer the questions. Okay, now let's move ahead to our second part which talks about the artist. Pandit Ravi Shankar, born on 7th April 1920, died 11th December 2012, was born in Varanasi. He was the youngest of 7 brothers. At the age of 10, he went to Paris with his brother Uday Shankar's dance troupe. By the age of 13, he had become a member of the troupe and learnt to dance and to play various Indian musical instruments. He toured Europe and the United States in the early mid-1930s. The young Shankar enriched his travels by learning French, discovering Western classical music, jazz and cinema. So पंडित रवि शंकर जी है, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में और वो 7 भाई थे. तो अब जब वो 10 साल के थे तब वो अपने भाई के साथ, उदय शंकर जी के साथ उनके डांस ट्रूप में शामिल हो गए और गए थे पेरिस. ओके, अब अलग अलग डांस फॉर्म, वो अलग अलग ही लर्न टू डांस, ओके, और एट द सेम टाइम अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना उन्होंने सीखा और अपने आप को उन्होंने और एनरिच किया, ओके, बाय लर्निंग फ्रेंच, डिस्कवरिंग वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, ओके, जैज़, सिनेमा, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी. ओके, एंड ही इम्प्लीमेंटेड देम इन द डांस फॉर्म्स और द म्यूज़िक. Okay, however, the call of music was greater and Ravi Shankar left the ballet troupe to learn sitar under Ustad Alauddin Khan of Maihar. Okay, so but उनको मतलब इतना सब सीखने के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा उन्हें अपील किया, okay, which actually got stuck in his brain was the love for music. और फिर उन्होंने अपना डांस ट्रूप छोड़ दिया, बैले ट्रूप छोड़ के
he learnt sitar. उनके गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खान of Maihar. Okay, the sitar is the creation of Amir Khusro, who gave it the name of Sehtar, which means 3 strings in Persian. Ravi Shankar underwent rigorous training under his ustad. He practiced for long hours to master the instrument. He has been one of the most brilliant sitarists the world has ever known. He has carried the banner of Indian music to every corner of the world. George Harrison of the well-known group The Beatles was so impressed by him that he took to playing the sitar. So, रवि शंकर जी ने जब सोचा कि मुझे माई कॉलिंग इज़ द म्यूज़िक, देन ही स्टार्टेड लर्निंग सितार. उनके गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खान ऑफ माइहार. और सितार का मतलब होता है द 3 स्ट्रिंग्स इन पर्शियन लैंग्वेज. ओके, और फिर उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग हुई उनकी. ओके, एंड देन उन्होंने भारत का नाम, इंडिया का नाम रोशन किया. ओके, एंड ही थ्रू हिज art of playing the sitar, he was so famous all over the world कि जॉर्ज हैरिसन, who was a part of the Beatles group, Beatles करके जो इंग्लिश बैंड है उस ग्रुप में थे जॉर्ज हैरिसन ने. he was so impressed, okay, that he himself started learning the sitar. Okay, Ravi Shankar also performed with the world famous violinist Yehudi Menuhin, okay, and the symphony conductor Zubin Mehta. Besides the Chaste classical tradition, he has also composed tunes for light music, using his vast knowledge of the various forms of music. The tune of the popular song Sare Jahan Se Acha was composed by him in 1945. Ravi Shankar, also known as Pandit Ji, has a long list of awards to his credit. So, Pandit Ji ne not only did he take the tradition of classical music further, उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी धुन उन्होंने कंपोज की. एट द सेम टाइम बच्चों, हमारा सबसे फेमस सॉन्ग है ना सारे जहाँ से अच्छा, उसकी जो ट्यून है वो कंपोज की है पंडित जी ने. ओके, सो और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. ओके, द पद्म विभूषण, द मैग्सेसे अवार्ड, द पोलर म्यूजिक प्राइज, ऑल्सो कंसिडर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ म्यूजिक, जापान्स प्रीमियम इम्पेरियल अवार्ड, एंड फाइनली द भारत रत्न are just some ways in which the world acknowledged the maestro. He is also the recipient of 3 Grammy Awards and a Grammy for Lifetime Achievement posthumously in 2012. He was also the recipient of the Tagore Award in recognition of his outstanding contribution to cultural harmony and universal values in 2013. Ravi Shankar composed a new rag for the 50th anniversary of India's independence and named it Rag Swarn. His autobiography is called Rag Mala. Each chapter in the book is named after a rag composed by him. So, उन्होंने करीबन 50 राग कंपोज किए, नए नए राग बनाए. ओके, और जो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, 50th इंडिपेंडेंस डे था, उसमें उन्होंने एक नया राग सबके सामने पेश किया, विच वॉज नोन एज द राग स्वर्ण. And he has won so many different awards, not only in India but also worldwide. So children, don't you feel proud that you have such people in our country, okay, who are making the name of our country, really grow high all over the world. So बच्चों, जब हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा सर भी ऊंचा हो जाता है with pride that we are blessed कि हम ऐसे कंट्री में born हुए. So children, quickly reread this chapter. I hope you've loved seeking knowledge about the different dance forms and also about Pandit Ji. And I'm sure children, whenever you get an opportunity, you will go to watch any of the shows of our dance forms. Do grab the opportunity. And now quickly read the chapter, learn the important words, don't forget to do the dictation words, learn the meanings of the difficult words also, and don't forget that you also have to do the back exercises.